So today we are going to see semiconductor materials. Semiconductor materials are basically used in electronic devices and different types of sensors. Now, what do you mean by sensors? Okay, sensors are those electronic devices or equipments, or we can say that instruments, which will be giving you an idea about the physical quantity. Say for example, speedometer hai, or if you are having a temperature measuring device. So these all details of that temperature value or a speed value that will be converted into an electric signal. ये काम करता है आपका सेंसर, और ये काम करने के लिए उसे जिस तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट होता है, वो प्रॉपर्टी आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल में होती है. ओके, सो नाउ इन द 10th स्टैंडर्ड हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स? 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, रीड किया है? एनीवन? कंप्लीटली न्यू टॉपिक है आपके लिए. Okay, so now we will see this all points which are related with our syllabus, that is introduction, types of semiconductor, what are those types, what is the difference between the insulator and conductor. Okay, then what exactly the p type and n type semiconductor material, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं. Okay, so first point, what do you mean by semiconductor? ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं? Okay, so if we talk about the semiconductor material, that then we must say that there are first material which we have studied, that is a conductor material, right? Conductor जिसमें electricity and heat energy जो है वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है. वो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, उसका ट्रैवल, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो सकते हैं. क्या हुआ कार्तिक? नहीं सर, कुछ नहीं, फ्लो बोल रहा था, फ्लो हो सकते हैं. फ्लो हो सकते हैं. ओके ओके, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर मटेरियल, जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वहां पर उसके अपोजिट साइड में हम देख सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल में वी आर नॉट अलाउइंग दोज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, एंड इट विल बी स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट. और इन दोनों के बीच में, मतलब समटाइम्स इट इज अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड समटाइम्स इट इज नॉट अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. ये जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर सम एप्लीकेशंस, जहां पर हमारा कंट्रोल हो सके कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे हम पास करें या ना करें. ये प्रॉपर्टी जो है ये उस मटेरियल में आना जरूरी था, ऐसा रिक्वायरमेंट था. तो इस मटेरियल का साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इजाद किया, उसको फाइंड किया. ठीक है. So let's see what this definition says. A semiconductor is a material which has electrical conductivity between that of the conductor, like a copper, and an insulator such as glass. Conductivity of a semiconductor increases with the increase in the temperature, and behavior is opposite that of the metal. So if you talk about the metal, the conductor will increase its conductivity when the temperature is increased. Okay. बट सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं. ओके, नाउ हियर इज अ ग्राफ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर वेरिएशन एंड कंडक्टिविटी is something which is related with your three types of material. Now this graph you must have draw. ओके, ये ड्रॉ करना है आपको ग्राफ. एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे आपकी कंडक्टिविटी है, एंड एज पर मटेरियल्स हाउ द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग योर कंडक्टिविटी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इंसुलेटर्स कैसे है, इंसुलेटर किस तरह से काम कर रहे हैं. ओके, देन सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह से काम कर रहा है. काम कर रहा है का मतलब क्या है कि उसमें किस तरह से आपके गिव मी अ मोमेंट, ये ड्रॉ करो आप डायग्राम. ओके, ये डायग्राम जो है ये आप ड्रॉ करो. जैसे ही ड्रॉ करोगे, टाइप डन इन द चैट बॉक्स. काफी सिंपल डायग्राम है. अभी तक तो बहुत लोगों ने ड्रॉ कर भी लिया होगा. दोज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनको पता है, सर बताएंगे ड्रॉ करने के लिए. जो एक्सपेरिमेंट क्यों तो कहेंगे खबर है. पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के पास ड्रॉ नहीं किया है, ये अगर नहीं किया है तो ड्रॉ कर लो. डन. हेलो सर. ओके, डन एवरीवन.
Perfect. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. So now this particular conductivity relation of your semiconductor material is useful whenever there is an application like diode, rectifier, okay, transistor. तो किस तरह से इसको एप्लीकेशन में लेना है वो भी हमें आज देखना है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर डन एंड रेडी विद दिस. आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ दिस semiconductors are made up of which materials? Say for example, conducting materials can be easily classified as they are made up of metals. But here semiconductors are very specific materials like a silicon, germanium and gallium. Okay, now they are not only the pure material which are actually useful in our overall semiconductor devices, but they will be acting in between your conductor regime and insulator regime, and they are also, you can say that they are not a pure conductor and they are not a pure insulator, but they will be changing their role between the conductor and insulator. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now how this material, insulator and conductor materials are different, let's see. An insulator is material, ये हमने पहले ही देखा है, that does not conduct the electric current, no conductivity and wide range of temperature, and valence electron. Now this is a very important concept that we should understand for our semiconductor material. Valence electron का मतलब क्या है? That whenever there is an valency availability of our electrons to move, that insulator is going to stop that. Okay, and conductor के लिए अगर हम देखेंगे तो it is allowing that particular valence electrons to free, keep them free, and these free electrons are actually moving. So this is an important statement. Okay, now going to the types of semiconductor. What are the different types of semiconductor? Let's see. First of all, it's intrinsic and extrinsic semiconductor. First type. Okay, first type क्या है? Intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor का मतलब क्या है? That first it is a pure form of semiconductor, so there is no any impurity added. Okay, so it is not having any foreign element. It is not having a, if it is a silicon, it will be 100% silicon. Okay, if it is a germanium, it will be 100% germanium. No any external impurity is added in this. Okay, in the intrinsic semiconductor. So write down this name, intrinsic semiconductor, in your notebook. That types of semiconductor, first one is intrinsic and second one is extrinsic semiconductor. Okay, perfect. These are the two types of semiconductor. Now we will see first one, that is intrinsic semiconductor. As we have seen that it is a pure semiconductor. So this pure semiconductor can be a keyword for you. You can write down this pure semiconductor. Okay, second is that valence electrons are not free to move. Valence electrons are not free to move, and because of that it will be acting as an insulator. So प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो आपका क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करता है. देन दिस सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हमने हीट किया, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर चांसेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू राइज and it will start conducting the electric current. Okay, now this heating is not you can say क्या चल रहा है गाना, क्या नंबर है इसका, एनरोलमेंट नंबर देखना पड़ेगा. सुफियान शेख लिख के रखा. सब लोग थोड़ा ध्यान दो यार, कुछ तो नहीं सीखना है तो लेफ्ट हो जाओ, सिंपल सी बात है. सेल्फ स्टडी करो. अगर अटेंड कर रहे हो तो 100% दो अपना. ओके, जो कि अच्छी बात है, वही मैं आपको बताऊंगा. नहीं करना है अटेंड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर ये लिखना है क्या? नहीं नहीं लिखना नहीं है, बस सुनना है. पहले जरा तू भी सुन, पहले लेक्चर में तूने भी ऐसा कुछ किया था. हाँ सर. हाँ, अभी ध्यान दे, ठीक है. ओके सर, ओके. The number of free electrons set free by the heating pure semiconductor is very small, and we can say that heating की वजह से वहां पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे. इसलिए हमें कुछ अलग तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बढ़ाना है. वी वांट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो
That's how this type of semiconductor is invented, that is called as a extrinsic semiconductor. Okay, extrinsic semiconductor किस तरह से बनता है, किस तरह से उसके टाइप्स है, वो हमें अभी देखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, intrinsic semiconductor is like you have a intrinsic semiconductor added with your impurity. Now that impurity is not a simple impurity where you can say कि जो भी मटेरियल हमें मिला है वो उसमें हम ये impurity ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता है. Impurity is like two types of impurity, and according to the type of impurity the semiconductor material will have its own type. तो सबसे पहले हमने types of semiconductor में क्या देखा? Intrinsic semiconductor and और extensive. semiconductor. Yes. And in extrinsic semiconductor again we have two types. कौन से है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. But before that let's understand this. Now extrinsic semiconductors are created when an impure atom is diffused or implanted into the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor किस तरह से है? Say for example you see this diagram. Is it visible to you? थोड़ा zoom कर लेते. Yes. Yes, sir. Now there Yes, are sir. silicon atoms, and silicon atoms have 4 electrons in the outermost shell. हर एक SI के बाजू में आप देख सकते हैं दो दो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है. उसका कौन सा बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है. नाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड once it is formed, it is having a sharing of electrons. Sharing of electrons का मतलब क्या है? This particular structure will be having the complete octal by sharing the electrons. तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? So draw this diagram, and once you are done, just type done in the chat box. It will take a 2 minutes. Okay, so draw it fast. Okay, done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now moving ahead with this particular valence electrons you can see here. Now we are going to add impurity in this particular crystal lattice. Okay, now when we are adding this particular impurity, so there are two types of impurity which we are going to see now. Okay, let's see. So the process of diffusion or implementation or implantation of this impurity in the atom is known as doping. So now in doping there are two types. One is lightly doped, and one is a highly doped, or we can say the higher amount of doping is done. It means the higher amount of impurity is added into our pure semiconductor. Okay, now second is that the purpose of doping is to increase the number of electrons or holes to improve the conductivity of the extrinsic semiconductor. And this extrinsic semiconductor has now two types. One is called as a N-type material, and another is P-type. P-type. हाँ कार्तिक, आगे से प्रेजेंटेशन चालू कर तू यार. टीचर शुरू कर. पिछला स्लाइड करूँ मैं? हाँ, स्टार्ट रीडिंग. पीपीटी विजिबल है तुमको कार्तिक? नो सर, नेटवर्क इशू आ रहा है सर, बार बार बारिश है ना सर, लैग हो रहा है. हाँ, रीड करो ये. चलो सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है. बराबर दिख रहा है सर. कार्तिक, तुझे अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया, नहीं तो कार्तिक करता था मैं तेरा अभी. ठीक है, चल जल्दी रीड कर. ओके सर, एक सेकेंड. Doped with prevalent elements like phosphorus, arsenic and antimony. Pure semiconductor are observed with prevalent impurity. Example, arsenic, which has 5 valence electrons. 4 out of 5 valence electron of arsenic atoms will form arsenic, form covalent bond with silicon atoms. An arsenic electron has no partners. This electron will be released from its orbit and become free electrons, which is carrier of negative current. This is an result N-type semiconductor. Prevalent impurities are considered to be donor dopants. Okay, so now first of all, it's a pentavalent elements. Okay, so pentavalent elements like phosphorus, arsenic, and antimony. Okay, I hope my audio is clear to you and you understand my pronunciation, right? So Yes, next sir. is that this pure semiconductor Yes, sir. is absorbed with this pentavalent impurity when we have a 5 electrons. Okay,
So now in earlier case we have seen that there are 4 electrons of a silicon atom. Now here we are adding a material which has a 5 electrons. Say for example Sb, that is antimony atom, and it has a one another, you can say, a valence electron, free valence electron. So what happened? This particular material is having, okay, so this particular material is having now an extra valence electron. Okay, so now this pentavalent impurity will be considered as a donor dopant. Now what do you mean by donor dopant? So जो doping है, that is done with the another extra electron. Okay, so now draw this diagram in your notebook, and once it is done, just type done in the chat box. Sir, done. Okay, done everyone. Now Yes. this particular pentavalent impurities are added, and it is available, or we can say that it is giving you the availability of this fifth valence electrons, and also it is sharing extra electrons with the other atoms, and it is forming a covalent bond. Okay, and then these silicon valence electrons will be again having its own bond with the another atom. So like that, if we increase the number of antimony atoms in this silicon structure, we will be getting an additional amount of electrons. Okay, so I hope this is clear to you. Now we are going to the next point, that is p-type material. Now n-type material में हमें पता चला कि there are some extra fifth valence electrons is there, and now in p-type we are just removing, or we can just reducing from 5 to 3. So pure semiconductors are absorbed with a trivalent impurity, or like indium, which has 3 valence electrons, and these 3 valence electrons of the indium atom will form a covalent bond with the valence electrons of already attached silicon atoms. Now what happened? When there is a less amount of electrons, the bond is incomplete, and one valence electron of a silicon atom is not able to form a bond, a covalent bond वो form नहीं कर पाएगा, क्योंकि there is a lack of electron, and this lack will be considered, or this void is producing a hole which is carrier of a positive current. Now what do you mean by positive current and what do you mean by negative current? ये हम आगे देखने वाले हैं, which is very important to know. Okay, with this p type of semiconductor is produced with a trivalent impurity. The word is very important, trivalent impurity, and it is considered as a acceptor. Earlier one was a donor, so it was giving a electron, and this acceptor is now receiving the electron because there is a void, there is a space. Okay, now this particular trivalent impurity is added, so there is a tendency of that material, p-type material, to trap the free electrons which are surrounded. Okay, जो आजू बाजू में उसको अगर free electrons किधर दिख गया, so it will try to invite that, try to accept that, and then it will be forming a bond. Okay, now let's see how p-type material, like यहाँ पे boron का boron atom का add किया है. Also we can have the indium here. So just draw this diagram in the notebook. Let me know if it is properly visible to you, and just draw it, and then we will move to the next point. Sir, this is the p type of conductor, no? Semiconductor p type. Sir. Yes, p-type semiconductor. Perfect. Okay, perfect. So you are done with this. आगे बढ़ते हैं. Now, if we compare these two type of material, n-type material and p-type material, how exactly this flow of current and how exactly this material are working, and how we are able to use them in our applications. Let's see. So in n-type material, the current flow is simultaneously of two types. One is like free electrons in a conduction band, which we call it as a majority current carrier. Okay, so now there are two concepts which you understand, that is one is a majority carrier, second is minority carrier. Now what do you mean by that? Majority carrier is something which you can have in the maximum amount in that type of material. मतलब n type material में हमें क्या मिलेगा? Majority electrons मिलेंगे, and minority क्या मिलेगा? Holes मिलेंगे.
अभी होल्स मतलब क्या, वैलेंसी, वहां पे जगह है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आके वहां पे जुड़ सकता है। और वो जो होल्स है दैट विल बी क्रिएटेड बाय योर thermally generated holes. Okay, now here in p type material it is already the majority will be due to your trivalent impurity. Trivalent impurity में क्या है, वन इलेक्ट्रॉन जो है उसके जिस जगह है there is a hole, and so number of holes will be more in the p type material and the majority current carrier will be the holes, whereas free electrons will be the minority carrier in p type material. Okay, let's see how it happens. So you have a battery which is having a source of electrons at a higher or elevated potential, and these holes and electrons will start moving from the excess to the lack, or from supply to the demand. So the electrons are moving that way, and as per the electrons flow, the current also flows through the एन टाइप मटेरियल। ये एन टाइप मटेरियल की हम बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके मेजॉरिटी कैरियर है। ओके, सो यू कैन सी हियर these green lines are your majority carriers, and the holes will be seen in a very less numbers, and they will be considered as a minority carrier. Okay, now going to the next one, that is p type material. P type material mein we have more number of holes and less number of electrons, and because of that when the holes are flowing they will be in the higher quantity with compared to the electrons, and electrons will be at the lower quantity and called as a minority carrier. Electrons, free electrons, or you can say valence electrons, will be generated thermally with thermally generated electrons, and then its quantity will be very much less. Okay, so I hope यहाँ तक समझ में आया आपको. Now when these two materials p type and n types are combined, okay, they are combined together, they are forming a pn junction, where in one case you have more number of electrons and in another you have more number of holes. It means there are chances जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश जब होगी तभी आपको वहां पे करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होगा. ओके, नाउ हाउ दिस सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड in our everyday life. Let's see. I started our today's session with this topic only, that how these semiconductors are used in our life. That is, first of all, you can say most of us have seen the air conditioning units. So in air conditioning units, we have temperature sensor. So these temperature sensors are made with the semiconductor. Rice cooker with a sensor or temperature requirement, we can have the semiconductor sensor. Then CPU, computer, mobile phone, smartphone, digital camera, television, washing machine, refrigerator, these all materials along with the LED bulb. LED bulb है, LED ट्यूबलाइट है, ये सारे डिवाइसेस में हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो उसका रोल जो है वो प्ले करता है. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिना बन ही नहीं सकता. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेमीकंडक्टर्स इन इंडस्ट्री, लाइक फॉर पावर डिवाइसेस, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब भी हम यूज करेंगे तभी उसमें जो बैटरी है उसको, बैटरी को जो चार्ज कंट्रोलर लगता है या बैटरी के पावर को जो कनेक्शन लगता है, वो सारी चीजें जो है वो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही कंट्रोल होती है. ओके, और वो कंट्रोल होने की वजह से ही हम वो मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं. तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो हायर वैल्यूज पे काम करते हैं. उनकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स देयर कैपेसिटी, एंड देन
we will be using this particular semiconductors in industry. Now, this is for today. We have seen this particular topic of semiconductor materials, and you need to write a report on the same. You have to find out